अगर if you look at the actual tax language of it, उसके अंदर exemptions होंगी, initial purchase cost and documentation cost, these would all be excluded. So the main thing that जो नए taxes जो लगाए, we have to see on the services sector, we've seen कि जी इन्होंने banking, insurance, स्टॉक ब्रोकर्स पे और उन्होंने जो इंपोर्ट हैंडलर्स के ऊपर 16% FED लगा दिया एंड बेसिकली देव सेड कि नाउ यू विल फॉलो ऑन द FED टैक्स रिजीम और आपके ऊपर जो CVT और प्रिजम्पटिव टैक्स जो हम लोग पहले कलेक्ट करते थे वो अब नहीं लेंगे. सो विद रिगार्ड्स टू द बैंकिंग सेक्टर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो 16% FED on their funding and non-funding services they can basically pass on to their clients and clients. Again, that the effect on overall the cost of or the cost or the value chain for manufacturing or everybody uses banking services. So obviously that's an upside उनकी जो cost पे. Secondly, अगर आप insurance पे देखें, again there is upside to those costs. So what we're seeing is that while the government is saying कि जी हमें tax base बढ़ाना है, and indeed it has imposed a number of taxes, जितनी aggressively we were hoping that the government would move and maybe make some real groundbreaking changes, those haven't come through. Obviously the political will to implement new taxes जब आपकी economy slow down हो रही है, जब लोगों के ऊपर वैसे ही इतना burden है high interest rates का, inflation का, तो obviously government भी उसका जो political will होता है its ability to implement those taxes compromise हो जाता है. तो I think what they've seen is that they've settled कि जी अभी services पे हम लोग tax लगा देते हैं, next year हम CGT on capital markets भी हमारी exemption ख़त्म हो जाएगी, then hopefully next year we can start talking about agriculture. ज़ाहिर एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी टच इशू इन आवर कंट्री कि उसके ऊपर टैक्सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो अभी गवर्नमेंट का जहाँ तक है जो उन्होंने टारगेट दिया है 1.4 ट्रिलियन का, दैट आल्सो सीम्स अ बिट एम्बिशियस. अभी हमने जो इस साल की हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विल बी अबाउट 1150 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी. सो यू लुकिंग एट अराउंड 20% इंक्रीज इन ए सिनेरियो जहाँ इकॉनमी आपकी यानी बेसिकली स्लो डाउन हो चुकी है. So whether the government will be able to collect this tax revenue is obviously will remain to be seen. But at this point, it seems like it will be a very stiff challenge for the government. अच्छा, जो हमने बात की ट्रांजैक्शन टैक्स की, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि obviously we know कि हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है it's very regressive, बहुत ज़्यादा. I think if I'm not wrong 70% is through indirect taxes almost. तो if that is the case, एंड जो अभी भी जो स्टेप्स लिए गए हैं विद ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन जो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट्स पे तो था ही और उसका थोड़ा सा चेंज कर दिया ऐसे FED लगा के, और सिमिलरली प्रॉपर्टी का जो बड़ा है, तो वहाँ पे कोई ख़ास रिफॉर्म्स नज़र नहीं आए. इट्स जस्ट मोर रिग्रेसिव, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर रिग्रेसिव. डू यू थिंक, वुड यू एग्री विद दैट? I think obviously regressive taxation in the sense के अगर हम लोग देखते हैं when we talk about regressive taxation we're looking at के जो lower income जो तबके हैं हमारे in our country, they have to pay a large portion of their salaries towards taxation. Now one of the main fears जो थे पहले था कि GST बढ़ जाएगा. Now GST is your major form of regressive taxation. Thankfully वो नहीं बढ़ा, they didn't increase that. But as far as increasing taxes on services which are used basically by large institutions or by manufacturing concerns, we can call it a regressive measure. Basically the government is still relying more on indirect modes of taxation than direct modes of taxation, and raising that in an economy jahan out of 180 million people maybe 2 to 3 million people only pay taxes. Obviously the shift, you're right, should be towards direct taxation and trying to generate revenue from there, because I think आगे जाके potential वहीं से ज़्यादा बनती है. इसलिए I think indirect taxes आप हमने काफ़ी टैप कर चुके हैं इस वक्त. राइट. अच्छा, जो बाकी टारगेट्स थे एग्रीकल्चर पे, यू बिलीव के अगेन जो ओवरऑल इकोनॉमिक टारगेट है, यू फील के इट्स वेरी रीजनेबल टारगेट है, एंड इट्स अ रीजनेबल टारगेट, एंड यू थिंक के वी शुड अचीव इट इफ एवरीथिंग गोज वेल एज फार स्पेशली द एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसर्न. लार्ज स्केल पे भी 1.8% बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि बेस इफेक्ट का भी इफेक्ट होगा, तो 1 आफ्टर what happened this year 1.8% should be achievable. What about the services sector? 3.8%, 3.9%. अभी इस साल क्या कहते हैं services grew at 3.6%. Target it was above I think 6.1 या 6.2% का था, तो obviously underperform किया था इस साल. Next year के लिए 3.9% obviously is more of a marginal increase you're looking at. Generally what we're going to have to see is के जो overall जो services की growth है is overall it is directly affected by how manufacturing goes and by how your agriculture sector is moving. So provided के the government, both the fiscal authorities and the monetary authorities can work together to stimulate the economy,
then you may see that services growth will be achieved. And at 3.3%, I think it's overall reflective. जो भी target दिया 3.3%, 1.8% manufacturing, 3.9% services, जो भी इन्होंने दिए, they're very cautious targets. And I think it's reflective of the fact that government is cognizant of the fact that we're operating in a very difficult environment. And Pakistan की हम लोगों ने बात करी थी previously structural weaknesses, वो अभी तक हैं पाकिस्तान की. इसलिए अभी जैसे अभी इन्होंने PDL हटा दिया, ठीक है, जुडिशल एक्शन हुआ था कि PDL यू नीड टू पास ऑन, जो रिलीफ आया इंटरनेशनल प्राइसेस का, यू नीड टू पास ऑन टू द कंज्यूमर. आप PDL 14-15 रुपए जो ले रहे थे आप उसको ख़त्म कर दें. गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वी विल एंड दैट PDL. गवर्नमेंट की हमने प्रोजेक्ट कर रहे थे कि अराउंड 110-120 बिलियन रुपए कमाएगा PDL से इस साल. नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि फ्रॉम द कार्बन सरचार्ज वी गोना अर्न अराउंड 135 बिलियन रुपीज़. ठीक है, तो what we're seeing though right now is that oil is over $70 a barrel. Now if oil stabilizes at this level or it continues to go up, what you're going to have to see is कि जो international prices हैं अब उसका pass through फौरन होना शुरू हो जाएगा. जो readjustment होगा, जो भी वो mechanism इतने के 2 हफ्ते 1 महीने जो भी वो रखते हैं, you'll see कि local prices will reflect international prices. पहले जो PDL का जो formula था it was percentage based. ठीक है, तो the government could adjust its formula to basically set a total price for petrol and adjust its PDL contribution or collection accordingly. अब basically उसे क्या करना है, because उसने एक fixed surcharge लगा दिया है, तो basically it will have to pass on whatever increase या decrease आता है to the end consumer. तो given कि हम लोग की oil expectations for this year, we expect that oil either will stabilize around the 70 mark or it may even see further upside, at least maybe in the next quarter or so. तो अभी जो हमें लग रहा है कि next fiscal year में government probably have to increase petrol prices, maybe by between 5 to 10%. And oil and oil related products का जो CPI में जो share है, it is about 15%, 15 to 20% आता है उसका total share. तो अगर आप suppose आप 10% बढ़ा देते हैं, तो that's again a direct 1.5% increase in your CPI. Right. Government का inflation target is 9.5%. And currently we believe कि ठीक है अभी high base effect on inflation चल रहा है, that will probably last until जो end of first quarter fiscal year 10, and we'll probably see कि inflation will come down to single digits probably by September or October. Whether it remains in single digits is obviously that's the big question. That's the big question. And जो budget में जो उन्होंने लिए हैं measures, it doesn't seem that they'll be able to contain the inflation pressures. One, जो FED पे services, that's going to increase charges. ठीक है, जो आप import handlers के ऊपर जो उनका 16% लगा दिया, against जो भी import कर रहा है वो handling fees उसकी बढ़ जाएंगी. ठीक है, आपने telecom पे आपने SMSs पे, we're a big SMSing country. I think we SMS'd about 30 billion text messages पाकिस्तान में भेजे थे last year. ठीक है, so that is going to increase your cost of using mobiles. Secondly हमने जो देखी है, ठीक है, जो आपके पेट्रोल प्राइसेस आपकी बढ़ जाएंगे. ठीक है, आपने import tariff 2 to 4% कर दिया है. एक और चीज़ जो I guess subsidy में जो reduction है, which itself will result in more inflation. Do you think that should have been done? Obviously it was expected, but is it more because of the IMF or इतना fiscal space मौजूद ही नहीं है and the government has no choice? The subsidy, are you talking about the subsidy on power? The overall subsidy का जो allocation है. हाँ, I mean if you look at 47% reduction. हाँ, they've done. अगर दो देखें, एक तो उन्होंने power पे हमने कम दिया, जो वापटा को allocation दिए उन्होंने, it's considerably less, and they've in fact called for a 10% power hike. Again, that's an inflationary measure which will directly feed into your CPI. On the other hand, on the positive side, उन्होंने कहा कि जी 12% gas tariff हम कम कर देंगे जुलाई में. But obviously power has a higher effect than gas generally on inflation. The other thing we want to look at is कि जो यूरिया, I mean DAP पे जो subsidy दे रहे थे, कम कर दिया, वो भी they've eliminated it. Basically that's in line with international prices which are down like 60-70% from last year, so it makes sense कि you shouldn't be paying out subsidies. But यूरिया पे जो expected था कि शायद वहाँ पे ना हो, उसमें increase आ गया है. यूरिया पे they will continue to subsidize.